Good morning everyone. My name is Chandrika. We will start this class from the continuation of our previous class on community. In previous class, we have discussed the meaning, definition and how the meaning of the community changes with the time. Then we will start with the portion of characteristics of community. First, characteristics we can say community as a group of people. When we talk about group of people, we have already seen the society characteristics, a group of people. We can see the association characteristics, a group of people. A group also is consists of group of people. So group of people is the basic of any component, anything in the society. So without any group or without any individual, we can't have a group, a community, or society, or association. So our first one is a group of people. Then single individual can't form a society. To form a community or society, there is a need of a group, many individuals and a group of individuals. Then the characteristics is locality. Locality means the territory, the area within which the people, the group of people interact, group of people live, and group of people lead their lives. The locality, where the basic need of a formation of a community. As per some scholars, community is a territorial group occupying a specific geographic area. We can say the nomadic people, जो आमे कहे कि जाजाबर, सेमाने भी जगह चेंज करती तांको लाइफ स्टाइल साथिरे जोठी सेमानकर तांको पशु पक्षी जो तांको पाखरे थांदे सेमाने जोठी जेते पर्यंत खाइबा पांती सेठी रोंती पुनी नेक्स्ट टाइम सेमाने जगह चेंज करती किंतु तांकर भी गोटे पर्टिकुलर एरिया भितर सेमाने जगह चेंज करती ना कि पूरा वर्ल्डटा सेमाने निजर लाइवलीहुड पाई डिपेंड करती. तो सेटा गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी रो गोटे पर्टिकुलर टेरिटोरी थाए. आजिकल आमे देखिले ना चेंजिंग नेचर ऑफ चेंजिंग मीनिंग ऑफ कम्युनिटी रे कि केमती विथ एडवेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिटी चेंजेस. बट there is an example of a community, perfect community life as a kibbutzim. Kibbutzim is a group of people. The group of is a community, example of a community which provides the perfect example of a community with a group of people living in a territory, and there are community sentiment, and the basic is they lead their life as we have already seen the definition of community. The community provides all the things, all the needs, all the needs that a human life needs to be lived. So kibbutzim gives a territorial reality to the search of the community. But territory and group of people are not sufficient for the community to be formed. Community is basically based on the community sentiment. What do we mean by community sentiment? Community sentiment means a feeling of belonging together. Ame community sentiment माने कौन को के the feeling of we, the feeling of ame, feeling of आमो गाँ, आमो घर, आमो लोको, आमो ग्रुप रो लोको, आमो कास्ट रो लोको, आमो गाँ रो लोको, जोटा आमोर वाला feelings आसे, that is the community sentiment. तो आम community पाई आमर गोटे sentiment आमर थाए कि आमे सेठी आमे आमर बोली सेटा को कहि परिबा. तो community sentiment involves sufficient contacts and common interest to instill conscious identification with the area we lived in. According to Markiver page, he explains community sentiment in 3 parts. One is we feeling. We feeling means the sense of relating to each other, the sense of commonness. See, the sense of amoro, moro, amo gaँ, amoro sahara, amo deso, the feeling of we.
that is the we feeling. And then the role feeling means आमर कम्युनिटी आम बहुत किसी करुमर रोल आमर कौन अच्छी कम्युनिटी आम कम्युनिटी एज ए मेम्बर आम कौन कर देन द डिपेंडेंसी feeling means how we depend on our community, for what reason, for what thing we depend on our community. So community sentiment is the basic of any community to be formed. That may nowadays we can see that may have territorial basis or not, but the community sentiment is must. So it is a sense of what the member have in common, the common memories, the common traditions, the common customs, or common institutions. So then we talk about self-sufficiency as a characteristics of community. Self-sufficiency means हमें जहाँ production करिबा ताकू हमें से आम बंचा तो आम आउ कहा डिपेंड करवानी. तो सम कम्युनिटीज आर ऑल इनक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स माने से माने तांको भितर जहाँ दरकार से माने कम्युनिटी मेंबर्स भितर निजे या पाखरे नथिले ता पाखरे नथिले तापर किंतु आउटसाइड कम्युनिटी ऊपर एते डिपेंडेंट होंतिनी जेमिति कि हमें प्रिमिटिव कम्युनिटी कहि परिबा आमे विलेज कम्युनिटी सम एक्सटेंट कहि परिबा. एबे तो बहुत किछि चेंज होछि ना विलेज कम्युनिटी रे किंतु विलेज कम्युनिटी सम एक्सटेंट इन द earlier days village community was also self sufficient community. Then we have seen the example of the Sentinelese tribes in Andaman Nicobar. आमे जो देखिथिले जणे क्रिश्चियन मिशनरीज रो जणे जाइथिले तांको अप्रोच करबाको किंतु से माने से भारत महासागर बे ऑफ बेंगल गोटे टापुरे से माने रुहंती. अंडमान निकोबर आम शुचे ना तार टापुरे से माने तांको भितर से माने को आउटसाइडर को तांको कम्युनिटी को आसीबा को दियंतीनी. तो तांको भितर से माने सेल्फ सफिशिएंट एमती बहुत सारा ट्राइब्स भी अछंती कि एबे भी के से माने सेल्फ सफिशिएंट. किंतु विथ द मॉडर्न सोसाइटी देयर सेल्फ सफिशिएंसी getting lesser and lesser. There are more interdependence of the community on each other. There are interaction of the community, different communities with each other. There are interdependence. So with interaction, there is the increasing interdependence of the community these days. But not the same for the modern age community. Then the characteristics is permanence. Permanence means community गोटे मॉब नुह कि गोटे गोटे दंगा करबा को जाउथिबा लोक नुह कि जेमती हाँ दंगा हैला तापर बंद हे गला सेटा नुह सेटा गोटे तार गोटे परमानेंसी थाए किछि 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 वर्ष पई कि बहुत वर्ष पई कम्युनिटी रही थाए माने तार कैरेक्टरिस्टिक्स से जहाँ संगे संगे हैला कम्युनिटी पुणी संगे संगे भांगी जाएनी बहुत दिन पर्यंत से चले. Next slide. Next characteristics, spontaneity. Spontaneity means the community is a bond or community is formed deliberately. माने आमे प्लान करके करूने कि हाँ हमको कम्युनिटी गोटे बनैबार अच्छी कि हमको एटा हमको करबार अच्छी तो हमको ए प्रोटेक्शन दरकार तो हमको ए कम्युनिटी बनैबा को अच्छी तो आमे सेटा जो बनाए ताको आमे कम्युनिटी कहि परिबानी. कम्युनिटी आमे when we born in a family, when we born in a society, we are automatically part of a community. आमे जेते जहाले भी गोटे कास्ट को आमे मना कर पारिबानी कि ना आमे से कास्ट को बिलोंग करूने आमे बाय बर्थ द कास्ट वी बिलोंग द बाय बर्थ द सोसाइटी वी बिलोंग द कम्युनिटी वी बिलोंग आमे सेटा को केबे हमर आइडेंटिटी रु काढी पारिबानी जो कम्युनिटी रो जो माने सेटा बाय बर्थ हमको मिली थाए और सेटा विथ जेनेरेशन सेटा चली थाए सेटा किछि प्लान रे तयारी हेन थाए. देन द फीचर ऑफ कॉमननेस means the likeness and similarity in language. We can say the custom, modes, tradition, and we can find the common way of life. There is a common way of life distinguishing one community from another. So then we can find the feature of size of the community. Community can be very small, like family can be a community, and like very big, like our
nation, India as a nation is a community. There is a we feeling in the community. There is a territory of India. There is a group of people. The obvious features of India. The गोटे स्मॉल साइज रे हमें पाई परिबा आ गोटे बिग साइज रे भी हमें कम्युनिटी रा मेंबर्स अछु स्मॉल साइज रा कम्युनिटी हमको आमे सेथिरे इंटरैक्ट करि परिबा फेस टू फेस इंटरैक्शन करि परिबा हमर इंटीमेट रिलेशनशिप आ मोर नियरर इंटरैक्शंस भी हुए हमर फ्रेंडशिप भी हुए और छोटे छोटे झगड़ा भी हुए छोटो कम्युनिटी रे आ बड़ लार्जर कम्युनिटी ब्रिंग्स अस opportunity, stability, economy and a constant stimulus of more various culture. आउ से हमको दिए peace और protection भी दिए बड़े बड़े war भी हुए. So both are essential to the fulfill of our life process. Both the larger part of community we are part of, but the smaller part of the community we are part of. Both are essential for our living our life. Then common life and interest and a name. Community, common life, as we say, there is a common way of life, common culture or community have. आमे आगुरु सोसाइटी रे भी पढ़छे ना जो कॉमन कल्चर अच्छे सेतिरु आमे आइडेंटिफाई करे कि that is a society and that is different from that society. सेमती कम्युनिटी रे गोटे निजर आइडेंटिटी थाए थ्रू इट्स कल्चर, थ्रू इट्स सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. Their eating pattern, dressing style, language, and emotional and cultural uniformity थाए तांको भितरे the members of the community भितरे. आ community रा गोटे ना भी थाए जेमती आमे कहबा village community की हिंदू community, Christian community गोटे ना भी थाए. Then regulations of relations. Community relations को regulate भी करे through the means of traditions, customs, morals, practices. आमे गुडा को कल्चर नेक्स्ट कांसेप्ट हमर कल्चर अछि कल्चर रे पढिबा कि ट्रेडिशन कोन हमर कस्टम कोन मोरल्स कोन प्रैक्टिस कोन त से गुडा को हमर लाइफ केमती रेगुलेट करूची तो व्हिच रेगुलेट देयर बिहेवियर हमर बिहेवियर को रेगुलेट करूची हमर steps and define the general need of man to live together. Man रो जनरल नीड को से फुलफिल करे और जो डिपेंडेंसी से एटा क्रिएट करे तो हमें एक साथी रे रही पारू. With this we can say for a community there are the characteristics. Then we will go to the there is a confusion between this is the society and this is the community. So how will differentiate with there are some features of similarity like group of people. There is a confusion between the sense of belonging and the community sentiment. So how we can differentiate community from the society? Next slide. Society is a web of relationship. When we talk about society, that is a web of relationship. When we talk about a community, that there are a group of individuals within a particular territory. That is the identification of a community, and the basis is the we feeling, the we feeling among the members. The society, the relationship may be known or unknown, but community somehow known relationships. The definite geographical territory not required for society formation, but for some scholars, for the previous scholars, for the previous studies, definite territory is the feature of the community. Then the society is abstract. We have already seen the society. There is no concrete form of a society, but with the territorial feature, we can demarcate a community from different communities or different organizations. Then the sense of belonging and the community feelings, community sentiment or community feelings differs with the sense of nearness, the sense of relating to ourselves. Society, the sense of belonging, मु सेठी को बिलोंग करे अब एटा मोर सोसाइटी कि मोर कम्युनिटी तार डिफरेंस है कि जोटा को मु निजर बोले मु गोटे निजर आइडेंटिफिकेशन मार्क हिसाब रे नै पारे भी मोर भी किछि रोल अछि सेठी प्ले करिवार से कम्युनिटी रे भी किछि रोल अछि मो पई करिवार
जिते बहुत सारा बहुत डिग्री ऑफ इंटीमेसी जिते बेसी हुए से आमर कम्युनिटी सेंटिमेंट आसे जो सोसाइटी एज अ पार्ट आम निजक रिप्रेजेंट कर सोसाइटी इज वाइडर सोसाइटी गोटे वाइडर कॉन्सेप्ट एंड कम्युनिटी गोटे स्मॉलर कॉन्सेप्ट देन सोसाइटी गोटे सोसाइटी आम बहुत सारा कम्युनिटी पाइपर कि गोटे सोसाइटी को आम एज अ कम्युनिटी भी नहीं पार जदि से आमर कम्युनिटी सेंटिमेंट अच्छी आउ वी फीलिंग अच्छी एट द टेरिटोरियल बेसिस अच्छी सोसाइटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस in the features of society we have already seen the both likenesses and differences are the features of society but in the community to be formed there is the basic need of the likenesses to be there likenesses is the important one to be formation of a community then with the modern society evidences the forces breaking down the self contentedness of community a community जो निज भितर रहा निजर गोटे आइडेंटिटी क्रिएट करवा विथ द डिफरेंट मॉडर्निटी फोर्सेस लाइक टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस इकोनॉमिक फोर्सेस कल्चरल फोर्सेस थ्रू रे सेटा चेंज होची से धीरे 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 हमर कम्युनिकेशन थ्रू रे जणे इठी नथिले भी हम ता सतिर कम्युनिकेशन करि परबा हमर गोटे मेंबर कम्युनिटी रा भी बाहर थिले से हम सतिर तार कम्युनिटी सेंटिमेंट तार छुआ मनकर भी से हम कम्युनिटी जन्म ही नथिले भी गोटे सेंटिमेंट थाए थ्रू द constant communication the technological forces the economic forces the cultural forces the parents माने जेते बेले से कल्चर को फॉलो करंती तो थ्रू the following their parents they have also developed the same culture in spite of being distant from the community so धीरे 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 कम्युनिटी रो जो सेल्फ कंटेंटनेस भी दूर भी होची समस्ते माने समस्ते अन्य मानक सहित भी रिलेट भी कर परछन्ते एट अ पॉइंट हम फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो जेते सारा सोशल मीडिया हो हमें हम बहुत सारा लोक मानक सहित कनेक्ट कर पारे बहुत सारा हमर डिग्री ऑफ इंटीमेसी भी बढ़ी पारे तो कम्युनिटी रो रोल टिके टिके कमे भी जाए सेठी सेति पई sociologist German sociologist Ferdinand Tönnies defines community as an organic natural kind of social collectivity whose members are bound together by a sense of belonging created of everyday contact covering the whole range of human activity जो everyday contact हुए natural kind of social collectivity रे सेटा को से community कहउछन किंतु से एटा भी फाइंड करछन that he traced the decline of Gemeinschaft. German means German word that means community bond. As Gesellschaft, the German word of Gesellschaft means associational bond was rapidly expanding. देखो चंद कि हम जो community bond अच्छी से धीरे 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 कम हे जाउची for the forces different forces of modernity or technological forces as we discussed economic and cultural forces the community bonds टा slow हे जाउची कि कमी जाउची आ associational bond टा बढ़ी जाउची here the community bond declines to associational bond while the organization of the population consciously created जोठी कि population गोटे group of individual एकाठी होचंदी कोथि पई ना गोटे conscious नेस रे हमें कहूचे ना कि कम्युनिटी गोटे डेलिबरेटली क्रिएट होची माने से कम्युनिटी को हमें मिसी के बनौने कि एटा हमको करिबार अछि कि सेटा हमको करिबार अछि तो हमको ए कम्युनिटी बनेबार अछि सेटा हम बाय बर्थ थ्रू हमें से कम्युनिटी रा पार्ट होचे तो सेटा भी धीरे धीरे माने विथ द सोसाइटी रो ग्रोथ रे कम्युनिटी बनचे किंतु आजिकली हमें कोन करचे ना कि हमरो डिफरेंट इंटरेस्ट अछि हमको फुटबॉल खेलिबार अछि फुटबॉल टीम अछि हमको क्रिकेट खेलिबार अछि क्रिकेट टीम अछि तार अलग एसोसिएशन अछि त हमर डिफरेंट इंटरेस्ट को नै के डिफरेंट ग्रुप्स भी बनउछि त तको हमें से जो एसोसिएशन डिफरेंट पीपल माने जोठी एसोसिएट होछंती तको से एसोसिएशन कहउछु त से एसोसिएशन टा धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी रे बढ़ुछि कॉन्शियसली क्रिएटेड विथ स्पेसिफिक पर्पसेस जोटा कि गोटे स्पेसिफिक पर्पस पाई बनी थाए कम्युनिटी रे सेमति किछि हम जानले कि सेटा बनी थाए गोटे कॉमन इंटरेस्ट थाए
किंतु सेटा समस्तंग पई कॉमन न थे समस्तंगर निजर भी एज अ इंडिविजुअल एज अ पर्सन भी निजर इंटरेस्ट थाए सेटा को जेते बेले सेही पर्पस पई जेते बेले से माने एकाठी होंती कि से माने एसोसिएट होंती and members are bounded by specific common regulation or interest माने common regulation से माने तांकर से एसोसिएशन जो बनांती से माने जो ठी एसोसिएट होंती ताकू आगु को जीवा पाएंगे ताकू तार रेगुलेशन पाए बहुत सारा रूल्स भी बनांती ता अनुसार से माने चलंती तो धीरे धीरे विथ मॉडर्न डेज हमर कम्युनिटी बॉन्ड ता डिक्लाइन हे कि एसोसिएशनल बॉन्ड ता बढ़ुची अकॉर्डिंग टू फर्डिनांड टर्निश. Then we will skip to our next concept, association. Association, as we have discussed, that is made up of specific interest. What is specific interest upare association bane thai. In modern complex society, associations are organized to promote specific interest. We become members by virtue of particular attributes or qualification corresponding to the particular purposes for which it is organized. गोटे गोटे पर्पस पाई पर्टिकुलर पर्पस पाई बना है जेमती कि हमें हमरो क्रिकेट एसोसिएशन देखिबा तो सेटा क्रिकेट फॉर द गेम ऑफ द क्रिकेट पाई हेची तो सेथिरे सेही इंटरेस्ट जहार अछि से माने सेही फील्ड को जाउछंती क्रिकेट एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ बीसीसीआई मु कहूनी हमें फॉर्म में हमरो लोकल भी एसोसिएशन थाए हमरो क्लब थाए क्लब हाउस गाँ गाँ भीतर क्रिकेट मैचेस भी हुए तो सेठी जते बेले हमें गोटे कॉमन पर्पस कि हमको क्रिकेट खेलिबार अछि कि अलगा गाँ साथी के अलगा क्लब साथी हमको कंपटीशन करिबार अछि सेठी जितिबार अछि तो कॉमन पर्पस इज क्रिकेट तापा जते बेले पीपल माने एकाठी होंती कि एसोसिएट होंती सेठी गोटे कॉमन सेठी गोटे एसोसिएशन क्रिएट हुए देन एज डिफरेंट इंडिविजुअल वी हैव सम स्पेशल इंटरेस्ट आमर बहुत सारा इंटरेस्ट अछि जेमते कि हमें ड्राइंग करबा कि हम गोटे हमें टीचर्स भी माने भी अछंती स्टूडेंट माने भी अछंती हमें देख परबा स्टूडेंट एसोसिएशंस भी अछि टीचर्स एसोसिएशन भी अछि आमे काम कले मनकर लॉयर हेले लॉयर एसोसिएशन भी अछि जो भी फील्ड रे हमर इंटरेस्ट अछि कि जो भी फील्ड रे हमें पार्ट अछु तार डिफरेंट एसोसिएशन हमें गढ़ी था एसोसिएशन काहे के गढ़ू काहे ना हम एका कहिले किछि हुए तो विथ the same interest with the same interest population when we get together when we associate each other then our demand can be fulfilled and demand can be raised in a very big way so हमें गोटे कॉलेज को भी कॉलेज और ट्रेड यूनियन स्कूल स्पोर्ट्स क्लब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोफेशनल सोसाइटीज एनजीओज एगुड़ा गोटे गोटे कॉमन पर्पस कॉलेज जेमती कि पाठ पढ़िबा पई ट्रेड यूनियन ट्रेड रिलेटेड बुझीबा पाए हम स्कूल्स जेमती आमे छोट बड़ पढ़िबा पाए स्पोर्ट्स क्लब पॉलिटिकल पार्टीज किछि पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करबा पाए किछि पॉलिटिकल इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है कि आमे पॉलिटिकल पार्टीज करूचे तो वी जॉइन अदर्स फॉर द सेम परस्यूट एंड फॉर्म एसोसिएशन हम अदर्स मानकर जदी सेम परस्यूट थाए सेम इंटरेस्ट थाए तांको आमे जॉइन करू तांको एसोसिएशन हमें मेंबर हो तो आमर जो इंटरेस्ट है तो आम तीनटा वे रे फुलफिल करबे आम इंडिपेंडेंटली फुलफिल भी कर परबा मु निजे निजे मोर एटा इच्छा अछि तो मु निजे निजे करिवे तो समस्ते तो एसोसिएशन थ्रू रे करंतिनी समस्ते तो ग्रुप हे कि करंतिनी ना तो मोर एटा इच्छा अछि तो मु एका करिवे किंतु आउ गोटे वे कर परबा कि आम अन्य मानक साथे झगड़ा करी कि मते सेटा इच्छा अछि तो मते करबा को दियो अन्य मानक साथे झगड़ा करी कि भी कर परबा कोऑपरेटिव परस्यूट भी अछि मैं समस्त एका इंटरेस्ट थी समस्त मिसिकी आम निजर इंटरेस्ट भी फुलफिल कर पारिबा एका साथे समस्त इंटरेस्ट भी फुलफिल हो पारिबा so the cooperative pursuit with the cooperative pursuit we can relate the formation of the association so we can say association is an organized group of persons pursuing a common purpose through some cooperative actions it may be spontaneous it may be casual it determined by community or maybe organizing groups
कम्युनिटी या डिटरमाइन करें ना कि गोटे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन को डिटरमाइन करें. देन द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन हैपेंस. एज एन एग्जांपल वी कैन से द बिजनेस, द चर्च, द क्लब से गोटे पर्टिकुलर इंटरेस्ट थाए. देन नेक्स्ट स्लाइड we will go to the definition of the association. An association, according to Machiavelli, is likely to be formed wherever people recognize alike complementary or common interest sufficiently enduring, the sufficiently distinct to be capable of more effective promotion through collective action. गोटे सेम इंटरेस्ट थिबो कि कम्प्लीमेंटारी कि जमती कि आमर गोटे लेबर एसोसिएशन थाए सेठी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन लेबर थांती किंतु सेमाने एकाठी सेमते सेमाने स्पेशलाइजेशन अनुसार तो सेमानकर एसोसिएशन बनांती ना सेमानकर सेमानकर काम सेमानक पई कॉम्प्लीमेंटरी जनक बिना आउ जण केबे रही परिबनी तो सेमाने कॉम्प्लीमेंटरी थांती तो सेमाने मिसिकी सब टाइप स्पेशलाइज्ड लेबर मिसिकी लेबर एसोसिएशन बनाती. कॉम्प्लीमेंटरी थाए और कॉमन इंटरेस्ट भी थाए कि हमको आज गोल भी कॉमन थाए कॉमन इंटरेस्ट भी थाए हमको एटा अचीव करिवार अछि कि हमको एटा करिवार अछि तो सेति पई से माने एकाठी हुंती से माने कलेक्टिवली एक्ट करंती विथ द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन. इन शॉर्ट we can say an association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interest in common. Then, according to Morris principle, an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to secure a specific end, to secure their specific end or specific interest. They form an organization. They form an organization, and with the organization, they relate to each other interest. So that is an association. According to Bogadus, association is usually working together or people to achieve some purpose. People mane they work together to achieve some purpose according to Bogadus as association. Next slide. There are different association we can say. The political association can say the political parties, the pressure groups, they have the common political interest. So for that common interest they got associated with each other and form the association. The religious association like our church, our temple, our mosque, semane किछि गोटे तांकर इंटरेस्ट चर्च क्रिश्चियनिटी रो तांकर रिलीजियस क्रिश्चियन रिलीजन रो किछि इंटरेस्ट नै कि से बने थाए. गोटे टेम्पल हो से हिंदू रिलीजन रो किछि इंटरेस्ट नै कि बन थाए. मॉस्क जेमती इस्लामिक रिलीजन रो कॉमन इंटरेस्ट नै कि बने थाए. देन द स्टूडेंट एसोसिएशन धीरे धीरे आम जो कॉलेज को दिबा एबे तो आम स्कूल सारी के आसिले कॉलेज को जब से आम देखा कि स्टूडेंट एसोसिएशंस रोल थाए रोल कौन थाए. तो स्टूडेंट आम इलेक्शन शुणीचे कि स्टूडेंट एसोसिएशन थ्रू बहुत सारा इलेक्शंस भी हुए. स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर्म हुए. एसोसिएशन स्टूडेंट मानकर इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी हो कि द कॉलेज हो द एनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो पाखे निजर इंटरेस्ट को स्टूडेंट सब स्टूडेंट तो जाकि जड़े जड़े कहले हेनी ना. स्टूडेंट एसोसिएशन थ्रू इंटरेस्ट द गवर्निंग बॉडी सामना को आसी थाए. द लेबर्स एसोसिएशन as we discussed, the laborers in any field, the industrial labor, maybe the daily wagers, maybe they can form a association for their wages, for their livelihood, for their safety, for any interest they can, any common interest they can form a association. Then the professional association like bar council association of the advocates or the lawyers, then the teachers association, the administrative people's association, then the international association. Next slide. With
various interests, there are various association we are related to. As we are part of a society, as we are part of a community, we are not limited to a single association. As our interest is vast, so our relation with the association is vast. At the same time, we can a member of many different associations. Then we will talk about the characteristics of associations. As we already seen, the group of people, as we said, the community, the society, the association, nothing can be established, nothing can be formed with the component of the individual or the component of the population. And a single population, a single people or the single individual can form any group or any association, any community, any society. The formation of any component of society, any part of community, any part of association, there is the need of a group of people. So, any collection of beings who enter to distinctive social relationship with one another. गोटे collection जे कि परस्पर साथी रे गोटे relationship साथी रे रुहे, but all groups are not association. सबु groups association नुह. That can be an organization, that can be a community, as we said, that can be a society. So association, for formation of association, there are other needs other than the group of people or the characteristics. There are common interest. सेमानंको भितरे गोटे कॉमन इंटरेस्ट थाए कि हमको ए इंटरेस्ट कि ए गोलटा को फुलफिल करबार अछि. जेमते कि हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन कहि परबा कि हमको इलेक्शन जीतिकी हो कि जो भी मीन्स रे हो पावर हमको अचीव करबार अछि. द पॉलिटिकल एसोसिएशंस मानकर इंटरेस्ट थाए कि हमको पावर अचीव करबार अछि. से गाँव रे आज सरपंच हो, हमरे भी इलेक्शन गला आज सरपंच हो, आज जिला परिषद मेंबर हो, आज म्युनिसिपालिटी रो चेयरमैन हो, आज एमएलए हो, आज एमपी हो, आज एनीथिंग हमको पावर अचीवमेंट तांकर कॉमन इंटरेस्ट वे कि हमको पावर अचीवमेंट करबार थाए. द कॉमन इंटरेस्ट. देन cooperative spirit. As we say, the cooperativeness of the between the individuals form the group. Their common interest drag them to the cooperativeness. खाली मोर एका इच्छा अछि एटा करबा को मु एका चाहिले करि परबे कि बहुत कष्ट हबो. समस्ते से इंटरेस्ट हमर तांकर भी सेम इंटरेस्ट, तांकर भी सेम इंटरेस्ट, समस्ते एका साथे आमे चाहिबा कि ताको फुलफिल करबा पई तमे जदि मो पाखरे किछि लाकुना अछि मो से मते हेल्प करि परिबे. जदि तांको पाखरे किछि लाकुना अछि तो मो तांको हेल्प करि परिबे. तो थ्रू दिस वी कैन through this cooperative spirit, through this as an agency, as an cooperate, we can seek to realize our interest. So then our next characteristics of association is voluntary membership. The main distinction between the community or society and association is the voluntary membership. How? In association, that is your interest to be part of that group, your eagerness. तमे एका भी से अचीवमेंट कर परबे. जदि तमे पार्ट होबा को चाहो ना सेटा तम ऊपर डिपेंड करे. तो सेटा तम वॉलंटरीनेस कि तमर इच्छा के तमे सेठी जॉइन करबो कि नहीं, तमे से एसोसिएशन ना पार्ट होबो कि नहीं. तो धीरे धीरे से जो आमे जते बडा हम इंटरेस्ट को परस्यू करे, आमे निजे इवैल्यूएट करके आमे एका परिबा ना कि हमको से एसोसिएशन ना पार्ट होबार अछि कि हमर इंटरेस्ट पाए. तो सेटा वॉलंटरी मेंबरशिप को जाए कि आमे इच्छा आमे सेठी पार्ट होबा ना हमर इच्छा नहीं पार्ट होबा को. तो आम ऊपर डिपेंड करे आमे सेठी पार्ट हे परिबा कि नहीं. So closely or loosely structured, association can be closely structured like an organization. There may be formal roles of system and offices, business, corporations. There are rules and regulations. गोटे status, role, format से अनुसार हमको काम करबा पड़े. तो सेटा structured association आमे कहि परिबा. वे loosely associations थाए जेमते कि माने
as a common interest we get together, but we form an association, but there may be no rules and regulation being a part of that association. So then we can have a constitution for the characteristics of association. The constitution, the method of procedure, rules and regulation for the formation, for the regulation of the association in its way. Next slide. Consciously and deliberately formed association is consciously or deliberately formed. आमे सेटा को बनाई आमे जेमती कि spontaneously formed आमे community को देखिले community टा spontaneously formed हुए किंतु association टा हमर जेते बेले आमे जानो कि हाँ हमर interest ता सतरे मैच करछि कि आमे सेही association नो part है कि आमे हमर interest fulfill करि परिबा तो सेते बेले आमे consciously आमे गोटे form करूचे society कि consciously आमे गोटे part होचे society कि हमको ए rule regulation दे कि ए association नो part है कि हमर निजर interest fulfill करि पारे छै हम निजर साथरे साथरे जेते सारा members join करथांदे तांकर भी इच्छा कि तांकर जो interest है सेटा fulfill करि परिबा. The durability of association can be permanent or temporary. जेमति कि हमें association कहि परिबा कि हमरो जो धारणा हुए से माने किछि टाइम पई एकाठी हुंती फॉर्मेशन करंती हमरो इंटरेस्ट हला हमें हमरो एसोसिएशन ना आया तो हमें एठी धारणा देलो हमरो इंटरेस्ट अछि एटा को फुलफिल करो से इंटरेस्ट फुलफिल हला तो हम एसोसिएशन भांगी गला that is the temporariness of the association. Then the future of permanent notion of the association जेमति कि बहुत टाइम पाई चले the members हमें बार काउंसिल कहि परिबा जेमति कि जणे जे एडवोकेट हला से बार काउंसिल पार्ट हेबो पुणी सी जेते बेले अलग किछि प्रोफेशन आसीबा कि अलग को तार रिटायरमेंट के किछि हला तो से आज मेंबरशिप से बाहर को पळे आसीबो कि तार इच्छा हला से पार्ट भी हे पारे ता इच्छा न हला से बार काउंसिल मेंबर भी हबनी सेटा तार वॉलंटरीनेस आ परमानेंस से जेते मेंबर्स आसंतु जेते मेंबर्स चाहतु बार काउंसिल एसोसिएशन with the formal rules and regulation. There may be board of bar council association, governing body of bar council association. They form the rules and regulation for the association. With this rule and regulation, members are being regulated regularly. So semane jete members asantu jantu kintu bar council semti thai. So that is relatively permanent. Then the mob the part of the जामे को धारणा दबा को आसी थांती गोटे एसोसिएशन फॉर्म करके से माने बहुत टेम्पररी थांती कि गोटे तांकर गोटे पर्टिकुलर इंटरेस्ट पई से माने एकाठी होंती पुणी तापर से माने अलग हो जांती. एसोसिएशन में हैव लीगल स्टेटस. सम एसोसिएशन में हैव द लीगल स्टेटस से माने लीगली एज एन एंटिटी निजो को रिप्रेजेंट करि परिबे पुलिस पाखरे हो कि कोर्ट पाखरे हो कि से माने लीगली निजो को रिप्रेजेंट करि परिबे. Then the next slide, we can see in this picture that one is there is the voluntary membership. One can join the association as per his or her wish, and one can leave the association as per his and her wish. He or she can be the part of the association or not part of the association. तार इंटरेस्ट अनुसार से पार्ट हे पारिबो नहले पार्ट हे पारिबन तार इच्छा जते बेले हबो से जॉइन करि पारिबो से जॉइन करि पारिबन. द वॉलंटरी मेंबरशिप इज द बेसिक ऑफ द formation, a basic feature of the concept of the term associations. Next slide. There is also, we have seen the difference between community and society. We can have the discussion on the difference between the community and associations. Community, we have seen the broader concept. Within a community, we have seen various types of associations, and very much the picture in the slide shows
a community, the larger one, within it there can be 2, 3, 4, any numbers of associations. The association, though that's why the association is the subset to the community. All types of interest are taken into consideration in community. Community रे सब टाइप्स रो इंटरेस्ट थाए कम्युनिटी रो निजर परपिचुएशन केमती थाए सेही फॉर्मेशन कम्युनिटी आगु को बढ़े किंतु समस्तंकर इंटरेस्ट ता भीतर एकाठी हेकी थाए कि गोटे कॉमन इंटरेस्ट कि तार इटा इच्छा अछि तो समस्ते मिसे के सेही इच्छा पूर्ण करबा सेमती नाही कि सेठी गोटे कम्युनिटी रे समस्तंकर अलग अलग इंटरेस्ट थाए किंतु एसोसिएशन गोटे कॉमन इंटरेस्ट गोटे स्पेसिफिक इंटरेस्ट पाई क्रिएट भी हेता है कम्युनिटी आमे आगरु जान चुके से स्पॉन्टेनियसली फॉर्म हुए एज अ आमे जतबे जन्म हो से साथी रे आमे कम्युनिटी रा पार्ट बनु किंतु आमे गोटे स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो थाए हमको पढ़िबार अछि तो आमे स्कूल जाओ हमको योगा करिबार अछि योगा क्लास जाओ हमको गोटे चाकरी कलु तो टीचर्स हेलु कि टीचर्स एसोसिएशन पार्ट हेलु कि आमे रिटायर्ड हेलु तापरे भी एसोसिएशंस थाए लोक मानकर समान छोटे छोटे एसोसिएशंस बनांती तो लाइफ लॉन्ग आमे एसोसिएशन पार्ट हो किंतु विद अ स्पेसिफिक पर्पस रे स्पेसिफिक इंटरेस्ट रे जोटा बने थाए देन कम्युनिटी मेंबर्स आर इन्वॉल्व होली थ्रू आउट देयर लाइफ्स गोटे कम्युनिटी रे मेंबर्स माने तांको लाइफ जिते बेलू जन्म हुंती जन्म ठू आम गोटे कम्युनिटी पार्ट हो अप टू आवर डेथ आम मरवा पर्यंत से कम्युनिटी पार्ट हो रो आमर कम्युनिटी गोटे आइडेंटिटी जो दिए ताको आम मरवा पर्यंत से आइडेंटिटी आमर रही थाए किंतु मेंबर्स इन्वॉल्व एज फंक्शनरीज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन एसोसिएशंस मेंबर्स गोटे तांकर इंटरेस्ट पाई गोटे एसोसिएशन को जॉइन करंती से इंटरेस्ट फुलफिल हेले से माने अलग इंटरेस्ट पाई से एसोसिएशन को आगे को बढ़ाती नाले सेठी ही ताठू डिपार्ट हुंती से एसोसिएशन सेटा मेंबर्स को इच्छा पर मेंबर्स कर वॉलंटरीनेस ऊपर डिपेंड करे कि से तार होल लाइफ पार्ट हेबे ना किछि टाइम पाई पार्ट हेबे कि कमन तार इंटरेस्ट फुलफिल हबा पर्यंत पार्ट हेबे कम्युनिटी रे आमे पाइबा वे फीलिंग अछि ये जो कम्युनिटी सेंटिमेंट अछि मोर आमर किंतु रिलेशनल एग्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट थाए रैशनल इंटरेस्ट एग्रीमेंट थाए कि एसोसिएशन ने जोटा कि आमे गोटे कॉमन पर्पस पई आमे जानि सुनि कि आमे ए रूल आमे बनेलो ए रूल अनुसार आमे चलिबु आमर वे फीलिंग थू बेसी थाए कि आमर कॉमन इंटरेस्ट अछि हमको इंटरेस्ट फुलफिल करबार अछि दैट इज द पर्पस ऑफ एसोसिएशंस सो बेसी वे सेठी एते वे फीलिंग फॉर्मेट भी हुएनी कहीं ना आमर कॉमन टेरिटोरी भी न थाए कॉमन लिविंग भी न थाए कॉमन लाइफ कॉमन वे ऑफ लाइफ भी न थाई पारे एसोसिएशन तो एगुड़ाक तो गोटे वी फीलिंग आनिबार आम गोटे जगार रहू जिते तो धीरे धीरे से जगह से लोक मानी आमर वी फिलिंग्स आसे किंतु जिते आम एसोसिएशन फॉर्म करूँ आमर गोटे जगह गोटे मीन करे कि आम से गोटे जगार लोक हो तो सेठी वी फिलिंग फॉर्मेशन हवा बहुत कष्ट हुए तो स्पेसिफिक लोकालिटी थाए कम्युनिटी रो एसोसिएशन लोकालिटी हेले भी चलिबो न हेले भी चलिबो किंतु एसोसिएशन फॉर्म थाए से माने कांटेक्ट करंती विथ ईच अदर तापरे मेंबरशिप इज बाय बर्थ फॉर कम्युनिटी बाय बर्थ रे मेंबरशिप हुए मेंबरशिप बाय चॉइस एसोसिएशन है बाय चॉइस रे मेंबरशिप हुए तो मेंबरशिप प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ है एठी एसोसिएशन ने वॉलंटरी मेंबरशिप थाए गाइडेड बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन तार रेगुलेशन पाई गोटे कम्युनिटी रेगुलेशन पाई कस्टम ऑफ ट्रेडिशंस थाए ट्रेडिशन का कस्टम्स आमर वे ऑफ लिविंग वे ऑफ बिहेवियर वे ऑफ थिंकिंग को आमर से मोल्ड करे से रेगुलेट करे कस्टम ऑफ ट्रेडिशन से गुड़ाक कौन ना आमर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल आम पढ़ीचे तो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल कम्युनिटी रे आमर रेगुलेट करे आमर बिहेवियर किंतु एसोसिएशन ने मोर ऑफ
common rules and regulation तार जोटा फॉर्म होता है तार गोटे प्रोसीजर थाए से प्रोसीजर अनुसार आमर बिहेवियर आम सेठी करि थाउ सेठी आमर रोल्स आउ स्टेटस प्ले करि थाउ association रे more stable and permanent community is more stable and permanent than association. Then we can say lastly, with changes in society and modern technology and others, our interest and preferences increasing. आमर जिते मॉडर्न टेक्नोलोजी बढ़ुची आमर वे ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ुची तो आमर धीरे धीरे आमर इंटरेस्ट भी बढ़ुची नुआ नुआ इंटरेस्ट आसुची कि कंप्यूटर को लेकिन मोबाइल फोन को लेकिन आमर सोशल मीडिया को लेकिन बहुत सारा एसोसिएशन बहुत सारा इंटरेस्ट आसुची तो से इंटरेस्ट को लेकिन भी डिफरेंट एसोसिएशंस फॉर्म होची तो धीरे धीरे विथ इंटरेस्ट जिते बढ़ुची से एसोसिएशन रो फॉर्मेशन भी बढ़ुची तो दिस इज रियली एन एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन आम जो एज रे बंचुचु सेठी मोर वैल्यू करे फॉर एन इंडिविजुअल द एसोसिएशन द ऑर्गेनाइजेशन ही और सी मे बी पार्ट ऑफ आमर ह्यूमन लाइफ इज लार्जली रेगुलेटेड बाय द लार्ज एसोसिएशन दैट इज स्टेट एबे आमे गोटे आमर आमे लार्जली कहि परबा इन जनरल कहि परबा गोटे लार्ज एसोसिएशन द्वारा आमे रेगुलेट हो चुके जोटा को आमे स्टेट को स्टेट रो रूल्स और रेगुलेशन अनुसार से कहूची कि मास्क पिंधिबो हेलमेट लगेबो तो तार स्टेट एज एन एसोसिएशन आमर बिहेवियर को हमको रेगुलेट करुची आमे स्टेट एज एन एसोसिएशन आमे तार पार्ट अच्छु एट द सेम टाइम आमे बहुत सारा एसोसिएशन पार्ट अच्छु बहुत सारा एसोसिएशन मेंबर अच्छु आमर डिफरेंट इंटरेस्ट पाई आमे समराइज कर पाइबा एसोसिएशन with the group of population, the common interest and the voluntary membership. That is the base or the characteristics of the association. The community, we can say, the group of population, the common territory and the community sentiment. And in terms of society, you can say, the group of population, sense of belonging are the identity or the mark of a society. Thank you.